Good morning, everyone. So today I asked था on board from Mastro, the studio of English language. जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं चाहे वो CBSE हो ICIC और PSEB हो and it is very important for you to be thorough with your poetry or thorough with your literature of English and English is the most scoring part. आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो पोएम्स में इवन फ्रॉम द लिटरेचर पार्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थरो रहें अपने सारे पार्ट से. And so today I'm here to discuss with you the second poem on friendship by Khalil Gibran. And so firstly, I'll explain you the central idea and even about the poet and intro, whereas then we'll discuss about the back exercise and explanation of the stanzas. So starting with the central idea, the following summary of the poem's main idea is that the poet discusses the value and advantages of the friendship in this poem. Now, what इस poem में हमारे को सारी poem friendship के ऊपर based है कि कैसे एक friend दूसरे friend को help कर सकता है, कैसे love and affection show कर सकता है. Like he says, the buddy acts as a barrier and protection for us. He helps us in every way. He comprehends us in a manner that no one else can. All we have to do is show them love and they will return in favor. With them, we may express our emotions without worrying about being criticized. A buddy is a highly valuable person in our lives and cannot be replaced. Now, इस सेंट्रल आइडिया में उसने हमारे को ये समझाने की कोशिश की है पोएट ने दैट फ्रेंडशिप प्लेज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ लाइक योर बेस्ट फ्रेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ. आप कुछ भी उसके साथ शेयर कर सकते हो बट ही और शी शुड बी प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स यू and they should comprehend you in that manner that you can achieve your any goal you can achieve and he could help you with any kind of thing. Now he says कि अगर आप उसको अपनी तरफ से love affection show करते हो तो he will in favor return you it and with them you may express your emotions about worrying any मतलब अगर आप कोई worry में हो आपके emotions आपकी feeling state of mind you can share each and everything with your best friend because you know what matters is कि वो आपकी age के हैं he is with you सारा दिन आपके साथ रहते हैं you can share each some things we cannot share with our parents we cannot share it with our teachers. Some things are genuine that we can share it with our friends. So best friend plays a very important part. Now we'll discuss some things about the poet. Now Khalil Gibran was born in Basri, Lebanon on January 6, 1883. Gibran's first painting exhibition took place in Boston in 1904. He studied painting in Paris from 1908 to 1910. अब इसमें वो बोल रहे हैं कि लेबनन में कहलील गिब्रन बॉर्न हुए थे पोएट बॉर्न हुए थे January 6 को. डेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आप इनको याद रखें बिकॉज ये 1 मार्क में आ सकती हैं. गिब्रन फर्स्ट पेंटिंग एग्जीबिशन अब ये आपको ब्लैंक्स के तौर पे चीज़ें आ सकती हैं कि उनकी फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ टुक प्लेस हुई थी या फिर व्हेन इट टुक प्लेस. सो यू कैन से इट टुक प्लेस इन बॉस्टन 1904. He studied painting in Paris from 1908 to 1910. He moved to New York in 1912, where he was engaged in writing and art. Gibran's early writings were in Arabic and in 1918 के बाद उन्होंने इंग्लिश में उसको लिखना शुरू कर दिया था. In 1920, he formed the Mahar Society of Arab Writers. On April 10, 1931, Gibran died in New York. उनका डेट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा याद रखना 10th April 1931 को उनकी डेथ हो गई थी. Now moving to next, the theme of the poem this poem appears in the book The Prophet. The Prophet Al-Mustafa has been living in a faraway city of Orphalese in 12 years. वो 12 साल से Al-Mustafa Orphalese में रह रहे हैं and is ready to onboard a ship that will take his home in this book. He is temporarily halted by a group of people with whom he converses about life and human existence. Friendship is one of these issues. Now they want to tell that 12 years से Orphalese में वो रह रहे थे. He is coming back to his home on the boat of ship. Ship में वो बोट कर चुके हैं and वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रुके हुए हैं जिनमें वो लाइफ के बारे में कन्वर्स कर रहे हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में कन्वर्स कर रहे हैं और मेनली द टॉपिक चल रहा है फ्रेंडशिप. Now I'll explain you the first stanza, so please look at it. Your friend is your need answered. He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving. And he is the board and your fireside, for you come to him with your hunger and seek him for peace. Now, the explanation for this goes, in this stanza, Al-Mustafa says that a friend can be a solution to all your problems.
दे से कि आपके फ्रेंड जो है आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है, वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लव एंड थैंक्सगिविंग बहुत ही एसेंशियल है इन दिस फ्रेंडशिप एंड यू हैव टू शो एज मच वैल्यू एज यू कैन इन योर फ्रेंडशिप। लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स वैल्यू द क्रॉप, जैसे कि फार्मर्स अपनी हार्वेस्ट को अपनी क्रॉप को वैल्यू करते हैं, वैसे ही आपको अपने फ्रेंड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ही कंपेयर्स हिज फ्रेंड एंड यू कैन अराइव आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द डे। आपका फ्रेंड ये अश्योर करे कि जब भी आप उसके साथ घूम के आए हो या आप सारा दिन थक के आए हो, ही शुड गिव यू द बेड टू स्लीप। आपको वो एक बेड दें जिसपे आप सो सकें, एक रेस्टफुल लाइफ जी सकें विद वार्म फायर। यू कैन आस्क हिम फॉर फूड, आप जब मर्जी उससे खाने की बात मतलब खाना मांग सकते हो व्हेन एवर यू फील हंग्री। एंड द काइंड वर्ड इफ यू आर नॉट रेस्टफुल, सो आप उससे काइंड वर्ड मांग सकते हो जब भी आप रेस्टफुल नहीं हो। So this was the end of your first stanza, and now we'll move to the second stanza and I'll explain you. So here comes the second stanza where it says, when your friend speaks his mind, you not fear up, not nay in your own mind, nor you do withhold the a. And when he is silent, your heart ceases not to listen to his heart. For without words in friendship, all thoughts and all desires, all explanations, expectations are born and shared with joy that is unclaimed. When you part from your friend, you grieve not, for that which you love the most in him may be clearer in his absence, as the mountain to climber is clearer from the plain. And let there be no purpose in the friendship save the deepening of the spirit, for the love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not but a net cast forth, and only the unprofitable is caught. So this is your second stanza, and now I'll explain you. Al-Mustafa says that when a friend asks you for opinion or something, you should be absolutely honest with him. Now they say कि जब भी आपको आपका friend एक मतलब रिव्यू के लिए मांगता है, he is asking for an opinion, so you should be clear with him. आपको पता रहना चाहिए कि आपको उसको yes बोलना है कि no बोलना है. Stay honest. A relation is strong whenever you are loyal or you are honest with your partner or with your best friend. So you should disapprove if you're not happy with it, and you should heartily affirm whenever you think that he or she should do that particular work. So even when your friend is not speaking, he is silent. So you should have a silent commune between both the hearts. Now they say कि आप अगर वो आपका फ्रेंड कुछ बोल भी नहीं रहा है, if you're thinking that he is thinking something else, so you should know in your heart कि उसका क्या मन है या what he is thinking. Friendship is a language that communicate verbally and even non-verbally. Now friendship एक ऐसी चीज है जो कि आप non-verbally भी communicate कर सकते हो एक दूसरे के मन को पढ़ के. All the wants, needs of your friends, all his deepest thoughts, expectations from you should be clear even when they are not directly voiced. Now he says कि आपको हर एक चीज डीपेस्ट थॉट्स एक्सपेक्टेशंस एंड आपको क्लियर रहना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है. Only then there will be joy in the friendship. When you say goodbye to your friend, it should not sadden you. जब भी आप अपने friend को goodbye करते हो, whenever he goes for a career opportunity or he is getting some good opportunity by going far away from you, so you should not be saddened because it is very important for a person to move on. Life is not just not beyond anything. You have to move on and आपको sad नहीं करना चाहिए वो part, मतलब आपको sad feel नहीं होना चाहिए because आपको इतना ज़्यादा मतलब उसको मोटिवेट करना चाहिए दैट ही शुड मूव मतलब ही शुड मूव इन लाइफ एंड योर फ्रेंड्स एब्सेंस में इट मेक इट क्लियर दैट यू मिस व्हाट अबाउट हिम. आपकी उसकी एब्सेंस आपको ये क्लियर करे कि आप उसके बारे में क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हो. One should make friends to deepen his soul and establish stronger bonds. A love is that not conditional is nothing more than netcast to make selfish gains. Now he says कि हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, हमारी सोल्स को डीप करने के लिए, हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. लव अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई चीज़ें भी आप कंडीशनली इंटेंशनली ऐड नहीं कर सकते. अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो या अगर आप अच्छे लॉयल फ्रेंड हो, so you should not be conditional towards anyone. You should love him unconditionally and you should help him. So this was the end of second stanza. ये आपकी explanation थी. Now we'll come to the last and the third stanza, which says, and let your best be for your friend. If he must know the ebb of your tide, let him know the floods also. For what is your friend that you should seek him with hours to kill? Seek him always with hours to live. For it is his to fill your need, but not your emptiness. And it is sweetness of friendship. Let there be laughter and sharing of pleasures. For in the dew of little things, the heart finds it morning and refreshed. Now in this,
The poet wants to say that the poet says that you should reserve your best moments. आपको अपने moments को capture करना चाहिए जो आपकी friendship में होते रहते हैं. If you help him or you go on a trip or you go somewhere else, आपको उन चीज़ों को capture करके रखना चाहिए. Meet him only when you have a little spare time. तभी मिलो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, एंड तभी मिलो when you have a free ample time. Please do not अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो उसमें इधर उधर मत हो. अगर आपको लग रहा है दैट ही नीड्स यू, यू शुड स्पेयर टाइम विद हिम. एंड योर फ्रेंड कैन फुलफिल योर नीड बट नॉट योर एम्प्टीनेस. आपका फ्रेंड आपकी नीड पूरी कर सकता है बट एम्प्टीनेस को पूरा कभी नहीं कर सकता. फ्रेंडशिप शुड मेक यू लाफ एंड शेयर ऑल द प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. In these little things that friends do for each other refresh a man's souls after a hard day of living in the difficult world. नाउ दे से कि जब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपके बीच में हो जाती हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत रिफ्रेश फील करा देती हैं. अगर आपकी सोल्स, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी चीज़ें मैच कर रही हैं, इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंसेस, तो ये अगर आपके हार्ड डे ऑफ लिविंग भी, अगर आपका दिन बहुत गंदा भी जाता है या फिर हार्ड जाता है, सो मतलब लास्ट टाइम अगर रात को आप उससे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात भी कर लो तो इट मेक्स यू फील वेरी रिफ्रेश्ड फ्रॉम दिस डिफिकल्ट वर्ल्ड. So this was the end of the three stanzas. I've told you the explanation, and now we'll discuss the question answers and the back exercise. Now, firstly, you're given with the stanza, and they have a certain questions between, and नीचे थोड़े से questions हैं. Now we'll answer them. Name the poet. Now you know the poet. Khalil Gibran is the poet. What is the most important thing a friend can give you? The most important and a valuable thing a friend can give us is an affection which will help us strengthen our relationship. This is the answer you can give. And when do we shower our friends with love? What do we earn in return for them? We receive thankfulness and thanksgiving in return for showing our friends love. How is your friend fireside? Now, how will I explain this? Since he keeps us warm and provides us with solid support when we need it, it is a friend like a fireside. A devoted buddy protects us from harm like a lifesaver. A genuine friend is truly a gift. Now, the poet says that मतलब हमारे को since he keeps us warm, वो हमारे को warm रखता है, हमारे को हर एक चीज़ से protect करके रखता है, हमारे को solid support provide करता है. तो a devoted buddy protects us with harm. वो एक life saver बन जाता है हमारे लिए, and he is a genuine friend is a true gift from God. अगर एक आपका genuine friend भी है कोई, तो he is a true gift from the God. Now there are next questions given, and I guess you have to answer them in at least 4 to 5 lines. And you're given with आपको एक passage दिया हुआ है. For which you love the most in him, maybe the first line is, for that which you love most in him may be clearer in the absence as the mountain to be climber. ये वाले passage के answers हम discuss कर लेते हैं. A mountain appears more clear when one is on the plain at some distance away. How does the poet relate this statement to understand the value of the friend? Now, अब हमारे को वहाँ पे एक line हमने पढ़ी थी, our plain mountain looks more distant when we see from a distance. The poet employs this statement to emphasize the value of the friend. वो हमारे को बता रहा है कि इस लाइन में वैल्यू छुपी हुई है फ्रेंड की, saying that separation helps to define and deepen the relationship. जो सेपरेशन होती है वो हमारे को डिफाइन करती है, जैसे कि हमारा रिलेशन और डीप हो जाता है उससे. You don't need to feel sad while you are gone from a friend because your affection for them just developed during their absence. Now हम कभी कभार कह देते हैं कि आपको हमारी इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी when we'll go somewhere, और मतलब if I'll not be there, तब एक बंदे को उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है. सेम पोएट हमारे को यहाँ पे समझा रहा है कि आप उसके लिए कभी सैड फील नहीं करते. इफ यू आर अगर आपका फ्रेंड चला गया है तो भी आपको उसकी अफेक्शन मैटर करेगी, बिकॉज वो तभी उसकी एब्सेंस में ही आपको उसकी अफेक्शन डेवलप होगी. सो दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू से हियर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ द फ्रेंडशिप? Our spiritual ties with our friends are strengthened as a result of friendship. वो कह रहे हैं कि जो spiritual ties हमारे हैं friends के साथ, वो हमारे को strength कर देती है as a result of friendship. The peace of friendship concludes with a key reminder, and the degree of closure is not rather by their readiness to dance through the entire determined by how much strength and heaviness two people place in one another. Now here the poet wants to say कि स्पिरिचुअल टाइज जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ बांधी हुई हैं, जैसे कि हम उनके साथ और सारा दिन रहते हैं, तो वो कहते हैं वो पीस ऑफ फ्रेंडशिप इंक्लूड करती है 2 पॉइंट्स.
जो कि एक की रिमाइंडर एंड डिग्री ऑफ क्लोजनेस, आपको उनके साथ क्लोज रहना पड़ता है। इट इज़ नॉट रादर बाय रेडीनेस टू डांस थ्रू द इंटायर डिटरमाइंड, मतलब ये नहीं है कि आप साथ ही रेडीनेस रहते हो, आपको सब पता है उनके बारे में कि हाँ ये चीज़ होगी ये चीज़ होगी। हाउ मच स्ट्रेंथ एंड हैवीनेस टू पीपल प्लेस इन वन अनदर बट द स्पेक्ट्रम ऑफ एग्जिस्टेंस विद इक्वल ईज। वो कहते हैं हमें पता है कि आपका रिलेशन किस एंगल से स्ट्रांग होगा, आप में कैसे स्ट्रेंथ है, क्या हैवीनेस है आपके रिलेशन में, वो हमेशा एक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्टेंस में इक्वल ही रहेगी। सो and the last question is list all the qualities of true friend should have according to the poet. Now the poet wants कि उनका true friend होना चाहिए who is loving, caring, who has sympathy and support according to him. A true friend is someone who supports us time of need, जो हमारे को उसी टाइम पे support करे जब हमारे को need है उसकी. He performs a similar purpose to support a boat. He serves a winter time fireplace, keeping us warm. हमारे को उसी टाइम वो एक फायर प्लेस पे मतलब थोड़ी सी जब हम कह देते हैं कि फायर बर्न हो जाए तो हमारे को उस टाइम पे वार्म रखे, हमारी तरफ प्रोटेक्टिव हो, वो हमारी सारी फुलफिल करें नीड्स जो कि हमारे को उस टाइम पे चाहिए जब हम कोई डिफिकल्टी में है. ही नॉट ओनली कॉम्प्रिहेंड्स व्हाट वी से बट ऑल्सो व्हाट वी ओमिट टू से. हमारे को हमेशा वही चीज़ ना करे कि जैसे हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, वो हमारे को ये बताए कि हमारे को क्या चीज़ सही बोलनी है, हमें कभी गलत पाथ पे ना लेके जाए. We don't be need to afraid to express our opinions in front of him. हमारे को कभी भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए जब भी हमने अपनी कोई ओपिनियन, हमने अपना कुछ भी वैल्यूएबल मतलब कोई भी हमारा ऑनेस्टी से हम अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं उसके सामने कभी हमने हेजिटेट नहीं करना. वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद हिम एंड लॉयल विद हिम. And so this was the idea that this was the qualities the poet expects from his friend. And the last question is, a true friend is the one who we can share. The first option you are given with wealth and property, second fame and pleasures, third joy and sorrows. So the answer here goes joys and sorrows obviously because सारी बात ही poem में इसके बारे में हुई है. And so this was the end of your session and hope you understood it. आपको समझ आया होगा. And mainly please be thorough with your poems because they are very scoring and you can gain very good marks from them. And so all the best to you guys. Please do a good job in your exams. All the very best to you.